हेलो कायनातीस। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कायनाती चाय पर। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आजम अरस्तु, और इनका मैं अभी इंट्रोडक्शन करता हूँ सबसे पहले। लेकिन डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कायनाती चाय पर आने का। ये रिमोट जूम के ऊपर चाय होती है तो जरा चाय का बंदोबस्त आपको अपने पास ही करना पड़ता है उसके वजह से मेरी माजरत। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ठीक है। लेकिन चले बात करेंगे। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपका मुख्तसर सा मैं एक इंट्रोडक्शन कर दूं। डॉक्टर अरस्तु जो हैं वो अभी उन्होंने रिसेंटली वो रिटायर हुए हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव थे वो बोइंग कंपनी में, और बोइंग जो है उसका स्पेस से ताल्लुक है, इसी वजह से आज हम इनसे बात कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो बीएससी, एमएससी, पीएचडी जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंट्रोल थियरी है में है इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो लंदन में है, ये वहां से। और इन्होंने, मैं भी इनका बायो चेक कर रहा था, नासा के साथ भी काम किया हुआ है। जो ईसा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसके साथ भी जापानीज स्पेस एजेंसी, जैक्सा ऑस्ट्रेलियन एजेंसी, रशियन रॉसकॉस्मोस। तो तकरीबन तमाम जो स्पेस एजेंसीज हैं जो कुछ कर रही हैं, इन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है। और ये प्रोफेसर भी हैं एडजंक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में, जहां पर वो ग्रेजुएट लेवल की क्लासेस पढ़ाते हैं। और इसके अलावा जो मैं अभी एक जिसका जिक्र आएगा वो ये है कि रिसेंटली उनकी जो कंपनी है कंसल्टेशन के हिसाब से, उन्होंने ब्लू ऑरिजिन्स, ये जो जेफ बेजोस की कंपनी है, इन्होंने वो उसके साथ भी उनको वो मशवरे दे रहे हैं। तो अभी बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कायनाती चाय पर आने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। ये कायनात गपशप बड़े बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपने ये सिलसिला शुरू किया खासकर उर्दू में, उसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ज़रूरत है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले तो ये बताएं, बाकी तमाम बातें हम करेंगे, कि आपको स्पेस का शौक कैसे पैदा हुआ? बड़ा अच्छा सवाल है। स्पेस ऐसी चीज़ है जिससे कि ड्रीम्स बनती हैं, ख्वाबें बनती हैं। मैं यंग बच्चा था, 15-16 साल का, कराची में 1969 में अपोलो मिशन था। उस ज़माने में कराची में नया नया टेलीविज़न आया था, टेलीविज़न सिस्टम आया था, ब्लैक एंड वाइट टीवी थी। तो मैं एज अ यंग स्कूल स्टूडेंट आई यूज्ड टू वॉच द अपोलो प्रोग्राम लाइव। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कैसा हो सकता है, ये इट वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन कि ये लोग कर भी सकते हैं। और कभी मैं ये सोच नहीं सकता था कि जो है एट दिस एज ऑफ माय लाइफ आई वुड हैव वर्कड थ्रू ऑल दीज प्रोग्राम्स और ये एक्साइटेड प्रोग्राम्स। बट द थिंग इज के आई गिव क्रेडिट टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम कि इन्होंने वो बीज बोया थ्रू प्रोवाइडिंग दोज टीवी चैनल्स, और उसको करने में ताकि यंग बच्चों को वो आंखों में जब चमक जो आती है, जो दे कैन ड्रीम थिंग्स। तो that's how I got the bug, space bug, and has never left me ever since. तो बड़े इंटरेस्टिंग वो है। अभी आपको पता है कि ये तो मेरा दिल से जरा करीबी बात है कि टेलीविजन जो है वो कितना इम्पैक्ट करता है। और जो कायनात के ऊपर मैं भी जो वीडियोस बनाता हूँ, उसकी मोटिवेशन वही है, क्योंकि मेरा भी जो एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट पैदा हुआ था वो कार्ल सेगन की जो सीरीज थी कॉस्मोस की वजह से। बिल्कुल सही है। लेकिन उससे जो पहली जनरेशन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आई मीन ये बहुत कॉमन चीज है कि लोग ये कहते हैं कि उन्होंने छोटे होते हुए वो जो मून लैंडिंग देखी थी, और वो उसने उनकी जिंदगी के रुख जो है वो बदल दिया। बिल्कुल सही। और वो और चीज वही है कि वो इंटरेस्टिंग कि वो एक लिहाज से टेलीविजन के थ्रू देखी, राइट? एक जो मीडियम उसमें एक इम्पैक्टेड है। राइट। तो ये चीजें जो है वो वाकई अगर आप किसी तरह से रिलेट कर सकें, राइट, आपने जिस बिल्कुल तरह वो सही। देखा कि यार वो चांद के ऊपर जो है वो कैसे हैं, उससे लोगों के ऊपर वो इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। और अच्छा, तो स्पेस चीज जी, ऐसी है, स्पेस के जो है कि इट इट ब्रिंग्स द ट्विंकल इन द किड्स आईज। ये चीज ऐसी है कि इट्स एक्साइटिंग, और ये चीज हमको बच्चों को बताएं जरूर। स्पेस इज सच ए मल्टी डायमेंशनल फील्ड कि ज़रूरी नहीं है आप स्पेस साइंस, बट ये बहुत सारी चीज़ों को, इट्स लाइक एन इंजन विच ब्रिंग्स अ होल ट्रेन बिहाइंड। अ ट्रेन कैन बी मेनी मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो वो बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है
हम उन बच्चों को ड्रीम करने की मौका दें, और इन चीज़ों से होती है। तो चले फिर डायरेक्टली अभी बात करते हैं, वहां से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं 2022 पे। और वो ये है कि आप आजकल जो है, मेरी आपसे जी इसी सिलसिले में बात हुई थी पहले भी अलग से, कि स्पेस की जो बात है वो अब खाली एक वो चीज नहीं रही कि अच्छा चलो एक दफा आप चांद पर चले जाएं और बहुत बड़ी बात हो गई, आपने बहुत पैसे उसके ऊपर खर्च कर दिए और वो एक मिशन हो गया, बल्कि अब जो स्पेस सेक्टर है उसकी कहानी ही बिल्कुल बदलती बदल जा रही है। तो आप ये बताएं कि इस वक्त हम स्पेस सेक्टर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। सो 60s में, 50s एंड 60s में स्पेस एक्सप्लोरेशन जो था, लॉट ऑफ साइंस थी और ऑल्सो सम डिफेंस की भी चीज़ें थी कि स्पेस सुपीरियॉरिटी के लिए। नाउ बट लुक एंड गोइंग फॉरवर्ड, नाउ 2022 के अंदर देख रहे हैं कि जो 50 साल में जो तरक्कियां हुई हैं, डेवलपमेंट्स इन होल स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड सेगमेंट्स, उससे ये हो गया कि आज ये स्पेस इंडस्ट्री बनी हुई है, और ये छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। दिस इज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड। और एंड इसमें पहले तो नासा थे, गवर्नमेंट सेक्टर से, दे वर ट्राइंग टू जस्ट हैंड होल्ड द इंडस्ट्रीज टू डू थिंग्स, हाई रिस्क था। अब वो सिस्टम चेंज हो गया। इट्स लाइक इफ यू कंपेयर दिस विद अर्ली एविएशन इंडस्ट्री, you know, again I'm Boeing, I can relate back to that, way back in जो टर्न ऑफ द सेंचुरी पे राइट ब्रदर्स ने बनाया है, वो खिलौने थे, चीजें, बट वेरी सून वो चीज जो दे डेमोन्स्ट्रेटेड द प्रिंसिपल्स, उसके बाद कमर्शियल, जब कमर्शियल उसकी वायबिलिटी देखना चाहे तो we found there's a lot of money, and now history is there, last 100 years के अंदर aviation industry has, I mean we cannot think of life without planes. Right. हम उस जंक्चर पे हैं आज कि हम वे थिंकिंग के जो एविएशन इंडस्ट्री थी 1930s के 40s के अंदर, वी आर एट द स्पेस इक्विवेलेंट टुडे, वेयर वी थिंक वी आर नाउ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट फंडेड exploratory experimental missions to commercial ventures, where people have realized कि no यार, you can make a lot of money in this. money किस तरह से? हम अगेन एक्सप्लोरेशन में ये था कि हम एक शहर छोड़ के दूसरे शहर जाएं, एंड कोलंबस ने ये किया, तमाम एक्सप्लोरेशन, वास्को ड गामा, दे ऑल एंड दे अनकवर न्यू वर्ल्ड्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। हम अगेन गोइंग बैक टू दैट्स द जंक्शन वी आर इन, कि व्हाई अर्थ बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत लिमिटेड है, हमारा घर, हमारा नेबरहुड बड़ा अच्छा है, हम इसको, पर आगे जाने के लिए वी शुड एक्सप्लोर अदर प्लेसेस, एंड टू डू दैट अभी अगेन इक्विवेलेंस ये है कि अगर मैं चांद पे जाना चाहूँ तो व्हाट वी डू टुडे is कि हम, it's like building a house from here to Australia. I build a house here in Los Angeles, fly the house into Australia, and but that is a completely wrong model. What you would do is to take the technology there and build house from local materials. So अब ये system ये है कि we have to figure out how we can explore, not just temporarily, कि अगर मून मार्स पे जाना हो, उसके आगे जाना हो, तो लेट्स टेक सम फंडामेंटल स्टेप्स। मून, चांद हमारे करीब है, सबसे करीब है, हम जा चुके हैं, वी नो अ लॉट अबाउट मून, और वी नो अ लॉट अबाउट द केमिस्ट्री, द मटेरियल्स एंड सो ऑन। उस मटेरियल्स को लेकर कैन वी बिल्ड अ सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म, इनफैक्ट परमानेंट हैबिटेशन, और उसके मटेरियल्स लें, एंड देन फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड अर्थ, use materials in our solar system to build and have missions going to have an interplanetary society. और मजे की बात यह है कि the governments से ज्यादा private industry is the one who is really interested in this, और वो लेके जा रही है, and it's happening. Elon Musk is doing, he is focusing on Mars, we are focusing, Bezos is focusing on moon, but it's amazing. That's the stage we are in right now. ठीक है। So sorry about this background. नो नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। ये तो अच्छा, ये टेक्नोलॉजी की जो है इंटरफियरेंस वो भी पार्ट ऑफ लाइफ। तो आपने एक इंटरेस्टिंग आपने एनालॉजी दी।
एविएशन के साथ, यानी कि जहाज़ों के साथ अगर कंपेयर करें, तो एक जो फ़र्क होगा और मेरा ख़्याल है कि इसमें स्पेस में पोटेंशियल ज़्यादा है, वो ये है कि जो जहाज़ों की एनालॉजी है, उसमें तो सिर्फ़ वो ट्रांसपोर्ट की बात है, राइट? एग्जैक्टली। मगर जब हम स्पेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें खाली ये नहीं कि हम शटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली उन रॉकेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पूरा एक सेक्टर खुल जाता है कि अगर हम चाँद पर जाएँ, क्या करें? अगर हम मरीख़ पर जाएँ, वहाँ पर क्या करें? या अगर हम किसी एस्टेरॉइड्स के ऊपर जाएँ और वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज़ वग़ैरह, तो उस लिहाज़ से ये बहुत आई मीन ये जहाँ एविएशन से बहुत बड़ी इंडस्ट्री का पोटेंशियल है, क्योंकि एविएशन में तो खाली ये था कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। बिल्कुल, यहीं पर अर्थ नहीं है। बिल्कुल, बहुत एग्जैक्टली करेक्ट। इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल डिफिकल्टीज भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हैं। डिफिकल्टीज ये है कि हम प्लेन्स जाते हैं, वी ऑल सब ऑर्बिटल हैं, तो ये बेसिकली क्लाइमेट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग प्लेन में ही ओनली प्लेन होता है, बट प्लेन को हम प्रेशराइज करके वी ट्राई टू सिमुलेट एज मच एज पॉसिबल ऑन द ग्राउंड कंडीशंस। इट्स रिलेटिवली इजी। स्पेस में ऐसा नहीं। स्पेस इज द वेरी हाई वेरी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, plus plus or minus 300 degrees to 500 degrees hota hai every day, and extreme climates, vacuum condition which humans cannot survive, high radiation, बहुत सारी चीजें हैं which is not possible for humans to. So to do that, instead of just making a tube of a plane which pressurize it, now you have to create an ecosystem which humans can survive in terms of radiation protection, in terms of temperature protection, in terms of vacuum conditions, loss of gravity, which जिस्मानी जो problems होते हैं because of lack of gravity, all those things. तो उनको करना आसान नहीं. But in the last 20 years, we have learned a lot by making a stepping stone, going to space by space station. इस पे मैंने बहुत वर्ष से मैंने काम किया. उसमें we have learned a lot. Both Russian space station and US space station, and then now multinationals में Japanese भी थे, Canadian, तमाम companies, तमाम दुनिया भर के astronauts वहाँ जा करते. We have learned कि how do we live for long duration in space? How do we take care of radiation, temperatures? ये करें gravity, lack of gravity. But to do, even then, short missions होते हैं, and space station is only 200 miles, 250, 300 miles from us, which is nothing. But to do it in a longer period, and वो भी है जाके you're going to come back. If you go to moon, चांद पे जाएं, मार्स पे जाएं और परमानेंट वहां रहें, ऐसा डिफरेंट बॉल गेम. तो बट वो टेक्नोलॉजीज अब बन रही हैं, और ये जो है, दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट कि रोबोटिकली जो मिशंस होंगे, जो इसको इंस्टीट्यूट माइनिंग, विच मतलब है कि जो वहाँ के मटेरियल्स हैं, चांद के पर रेगुलेट एक चीज होती है जो बहुत सारे, उसमें बहुत सारी चीजें, वी हैव ऑक्सीजन देयर, वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, मिनरल्स हैं, तो उसको हम वी विल डू इट, उसको रोबोटिकली माइन करें, उसको सेपरेट करें और उन चीज़ों से हम बनाएं वहाँ पर. और वो चीज़ें अब चल रही हैं. बहुत ब्लू ऑरिजिन में बहुत काम कर रहे हैं इसके अंदर, हाउ टू मेक दिस सिस्टम permanently from the local resources. Once you do that, then your door is open. Because if you think about it, कि यहाँ से जो मिशंस है, अर्थ से हमने निकलना है. अर्थ इज अ बिग मैस, तो हाई ग्रेविटी है. तो अर्थ की जो ग्रेविटी वेल है, विच मीन्स की जो अर्थ की जो पुल है, उससे निकलने के लिए हमें बहुत एनर्जी चाहिए. इसलिए जो बड़े बड़े रॉकेट्स बन रहे हैं, बोइंग के रॉकेट्स हैं, इलान मस्क बना रहे हैं, जेफ बीजोस हैं, यू सी नाउ मेगा रॉकेट्स बन रहे हैं. इट्स जस्ट 90% इज जस्ट गेट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी. तो हमें प्रॉब्लम है अर्थ ग्रेविटी से निकलना. बट इफ एंड अगर हम निकल के बाहर चीजें बनाएं, तो वी डोंट नीड दिस बिग रॉकेट्स. तो इसलिए ये है कि हाउ डू वी यूज मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ्स डोमेन, एटमॉस्फेयर से. नियरेस्ट मून है, एस्ट्रॉइड्स बड़े बड़े अच्छे हैं, बहुत मटेरियल्स हैं, प्लैटिनम, बहुत सारी चीजें हैं एस्ट्रॉइड्स के अंदर. सो दैट इज वेयर द फोकस इज, टू instead of making giant bigger and bigger rockets, use the materials outside and leave earth को आप देखें. और एक विजन ये है, अर्थ बड़ी प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह. ब्लू अर्थ हमारा जो है, वी डोंट रियलाइज हाउ ब्यूटीफुल आवर नेबरहुड एंड मदर अर्थ इज. बट इट इज गेटिंग पॉपुलेटेड. 7 बिलियन पॉपुलेशन हमारी है.
If you fast forward 2050 के अंदर we are expecting 9 to 10 billion people. It becomes unsustainable. So how we can, the goal is to how protect our Mother Earth by using resources elsewhere. और Earth को हम अच्छा रखें ताकि हमारा neighborhood बराबर रहे. और so these are the philosophical angles, but that is what the driving force is to have these big missions कि भी Earth को हम protect करें. You're doing all these missions for Earth. तो अगर मैं आपको उस पर थोड़ा सा पुश बैक करूं, तो आप मुझे ये बताएं कि एक लिहाज से हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं चांद के ऊपर या मार्स के ऊपर या एस्ट्रॉइड्स के ऊपर, राइट? हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है जमीन के ऊपर वो इतना अच्छा नहीं, जिस तरह से एनवायरनमेंट और ये सारी चीजें जो हैं, और फिर प्राइवेट कंपनीज हैं, रेगुलेशंस कम हैं फिलहाल इस वजह से, और भी थोड़ी सी अपील है स्पेस की प्रॉफिट्स के हिसाब से। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और एक लिहाज से, और आपका क्या ख्याल है कि क्या स्टेप्स होने चाहिए कि जो गलतियां हमने जमीन के ऊपर की हैं वो हम चांद के ऊपर या मरीख के ऊपर या स्पेस में एक लिहाज से हम वो रिपीट ना करें? बिल्कुल अच्छा, सही सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और ये आप ये देखें हम जो है एनवायरनमेंट के ऊपर हमारी थिंकिंग बहुत रीसेंट है, राइट? इफ यू थिंक अबाउट इट, हमने एक्चुअली वी नेग्लेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एज अ सोसाइटी across all countries recently. We were just simply in growth mode. तो ये लास्ट 10, 15, 20 साल मैक्सिमम, इससे पहले nobody used to talk about environment. But this is the consequence of the thinking of environment that is taking us to space also. Because कि हम now we are realizing यार इतनी प्यारी जगह है इसको, and now इसको आगे जाके हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो थिंकिंग है, जो हम अर्थ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट ये थिंकिंग हमें आगे ले जाएगी। वी विल ऑलवेज बी थिंकिंग, बिकॉज कि हाउ डू यू प्रोटेक्ट, वहाँ रिसोर्सेज बहुत कम हैं, और रिसोर्सेज बहुत हैं लेकिन उसको निकालना बड़ा महंगा है। तो व्हेन वी डू इट विल बी वेरी केयरफुल। प्लस अभी और एक चीज़ ये है कि आप यहाँ से बिफोर यू गो टू चांद या मार्स के ऊपर, अभी जो नियर अर्थ के अंदर जो हमने रॉकेट्स फेंके हुए हैं, हजारों लाखों रॉकेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो जो उससे जो गंध ऊपर है स्पेस के अंदर, उसको कहते हैं स्पेस डेब्री, बहुत हो गई है। तो उसको भी हम नाउ कोशिश कर रहे हैं कि उसको उस गंध को किस तरह निकालें। रेगुलेशंस बन रही हैं, पहले किसी ने नहीं किया था, अब जो है नाउ वी कैन ओनली थ्रो सो मच, उसको किस तरह से हटाएं, साफ करें। There are companies also going into commercial ventures to clean up that mess also. So there's a lot of work going on, both commercially and regulatory, to do space protection. ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं थोड़ा सा गियर में शिफ्ट करूंगा और हम पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम की बात करेंगे, तो मैं अभी उसके ऊपर मैं 1 मिनट में आता हूं, मगर उससे पहले आप अब ब्लू ऑरिजिन्स में हैं, राइट? और ब्लू ऑरिजिन्स जो है प्राइवेट कंपनीज, कंसल्टिंग आप कर रहे हैं, और ब्लू ऑरिजिन्स इलॉन मस्क की जिस तरह से कंपनी है, उसी तरह से स्पेस एक्स है, ब्लू ऑरिजिन्स है, आई मीन दे आर अमंग्स द लीडर्स राइट नाउ। और मोहम्मद शहजाद, उनसे मेरी बात हुई थी कायनाती चाय में, वो रिलेटिविटी स्पेस, दे आर आल्सो कमिंग अप। तो इस किस्म की कंपनीज आ रही हैं। आप क्योंकि आप सिस्टम के अंदर हैं, आई मीन हम लोग तो एक लिहाज से बाहर से देख रहे हैं, आप कंसल्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा और पता है। आपको, अगर आप ब्लू ऑरिजिन्स को देखें विद रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव टू दूसरी जो कंपनीज हैं, जिस तरह स्पेस एक्स है या रिलेटिविटी स्पेस है या और मुख्तलिफ कंपनीज हैं, वर्जिन स्पेस है, व्हाटएवर जो भी उसका नाम था, गैलेक्टिक, वर्जिन गैलेक्टिक जो है, अभी अभी हम गैलेक्सी के ट्रैवल के काबिल नहीं हुए, अभी हम खाली आसपास ही है। तो आपको ब्लू ऑरिजिन्स की विजन जो है उसमें क्या फर्क नजर आता है, या इन तमाम ये जो कंपनीज हैं काफी हद तक वो एक ही जैसी हैं? नहीं, दे हैव डिफरेंट विजन्स। इलॉन मस्क का जो विजन है वो ये कि
हम interplanetary बने और हमारी society should be interplanetary, and his focus is going to Mars. कि भी चांद करीब है, हमने कर लिया है, 50 साल पहले लैंड कर लिया मून पे. In a way that's true. Take a next big logical step is Mars. And so he's focusing on interplanetary society and trying to do that, and that's what it is. Jeff Bezos का जो vision है वो उल्टा है. He's actually focusing on Earth. That's why the Blue Origin is our blue planet. हमारा origin ये planet है. इस planet को best use किस तरह किया जाए by protecting its resources and using other resources for the benefit of this planet. So his first step is moon. Moon को permanently habitate करें, पूरा full base बनाए, complete it with all local materials, 100% local materials. So can you imagine? And और ये time scales में बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे. You're not talking about 20, 25, 30 साल पहले की बात करेगा. We are talking of very near terms. और ये सब चीजें हो रही हैं. Very near. I can't give exact date because those are proprietary, but they're very near. They're amazingly, shockingly, ambitious. But that's what is happening. When you have the richest person on earth, he can throw every bit of, for him to spend a few $1 billion is not, but that is exactly what we're doing. वो जो Amazon की vans हैं वो इतनी सारी हैं, मेरा ख्याल है वो भेजना शुरू कर देंगे, उधर delivery जो है वो चांद के ऊपर. But the pace से जो काम हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं, and especially now that I'm in the system, it's mind-boggling. Mind-boggling. फिर और एक चीज ये है कि space station, we built a space station, international space station. बहुत महंगा था, बहुत सारी चीजें थी. It was, now when you think about it, we learned a lot. But now going forward, again, कि he has bought another concept कि जो again इनका space station होगा, बड़ा जबरदस्त station है, उसके भी बहुत सारे चीजें चल रही हैं. It's a different vision altogether. So there is a slight vision difference between those two companies, but those are most powerful companies regardless. Actually, it's always good to have ये दोनों जो है moon focus, Mars focus, उससे जो technologies develop हो रही हैं, and these are hardcore commercial people. So इसमें हर चीज cost की बात होती है, manufacturing, very advanced technology, out of the box thinking. This time, although मैं 40 साल मुझे हो चुके हैं space business के अंदर, I think this is why this is the most exciting time in space ever. And this is what I'm saying कि मैं although मैं retire हो चुका था, I want to having a good time, but इतनी exciting चीजें हो रही है, it pulled me back. It was so exciting, and that's why I will also use this platform to say कि this is the time, and I will encourage किसी भी field में आप काम करें. Does not matter whether your field is mechanical, electrical, physics, chemistry, software. I don't care. There are opportunities in space, and this is the mega trillion-dollar business. Get into it, and it's exciting. It's really, really exciting. So I will saying that my life started with that, watching the moon landing that brought the twinkle. This is the next big opportunity for youngsters to look. This is the time to get in. So this is ये एक अच्छा वो pivot है. आपने जो इसका setup किया, तो बहुत सारे viewers जो हैं, ज़्यादातर viewers जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, और इसलिए हम उर्दू में भी बात कर रहे हैं. और I mean, किस तरह से कहें, लेकिन एक थोड़ी सी मायूसी की बात भी होती है कि पाकिस्तान की जो स्पेस में जो मौजूदगी है वो नेग्लिजिबल है, राइट? आई मीन पाकिस्तान के जो रॉकेट्स, जो सैटेलाइट्स भी गए, वो चीन ने जो है वो ऊपर भेजे. तो ऐसा आई मीन ये कोई ऐसी कहने की बात नहीं. आई मीन ये उस हिसाब से है कि ये सबको पता है, यानी कि ये कोई खबर नहीं है कि हमारी जो वहां पे पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी जो है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है. तो उस हिसाब से आप से मेरी पहले भी ऑफलाइन बात हुई थी कि आप इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान में भी डेवलपमेंट्स हों स्पेस के सिलसिले में. और अगेन जस्टिफिकेशन तो अभी आपने दी, अभी आपने यही कहा कि जी स्पेस जो है वो एक मेजर इंडस्ट्री होगी, जो सेक्टर है, इट वुड बी ह्यूज, फ्यूचर है, राइट? It is, and the future is here.
फ्यूचर इज हियर। तो अब हम, आई मीन, मैं और आप यहाँ पर हैं अमेरिका में, लेकिन हमारा कनेक्शन वहां से ऑब्वियसली है, इसीलिए हम ये बातचीत भी कर रहे होते हैं कि यहाँ से हम कनेक्शन रखें। तो आपका क्या, वो जो कहते हैं वो तिब्बी या वो कि आपका जो नुस्खा जो है वो क्या है, क्या करें वहां पे? अपॉर्चुनिटीज है स्पेस के सिलसिले में, तो पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम या पाकिस्तान में स्पेस की डेवलपमेंट के लिए क्या करना होना चाहिए? देखें, of course Pakistan, I must also, before I say कि मैं मेरी जो basic schooling Pakistan में, I owe my entire career to my mother country Pakistan, that's for sure. Pakistan has provided me the basic schooling मैं वहाँ किया था, and I didn't even do engineering, and I joined NED and then left for Scott. But I owe entire career to my beloved country Pakistan. Now when I look back in Pakistan की space agency, you'll be surprised to know, was one of the first space agencies. NASA हुई, उसके बाद 1969, one of the very few space agencies जो थी world के अंदर, Japan, India, they all came years later. Pakistan was one of the first ones. Suparco was formed by Professor Salam and Dr. AIIR Usmani. I actually was दोनों के साथ मैंने बहुत काम किया है. Professor Salam was my professor of physics in Imperial College, and Dr. AIIR Usmani, and we worked a lot for a lot of stuff. So we had that platform, one of the first few countries in the world, and we started launching sounding rockets वगैरह थे. We had launching places थे, सोमियानी से हमने किया था, बहुत कुछ हमने इस atmosphere के बारे में. We learned a lot way back when this no other country was even thinking about space. But इसके बाद लल हो गया. वो I think when you start things, scientific technologies, scientific organization, institutions should, उनका काम है to provide vision and the twinkle in the people's eyes, the kids' eyes. They cannot afford to be bureaucratic. तो वो bureaucracy के अंदर रह गए हैं. काम हुआ है, I'm sure they built some satellites, Reber बने हैं एक दो, but the thing is कि launching facility नहीं है. आप launch के लिए dependent on somebody else. So once you launch dependent on somebody else, you can't get it right. So आप चाहे कितना भी अच्छा बना लें, but you have, space is I also consider it as a three-legged stool. Three-legged stool में ये है कि three-legged इसलिए कि because you need to have balance in all those three, otherwise you don't have a mission. 2 is not enough, 4 is nice to have, but 3 is a minimum, but all the 3 के legs ही बराबर. एक तो space segment, which is satellite बनाए. Satellite की पूरी अलग industry है, and I think उसमें काम हो रहा है. They are building some satellites. उसकी चीजें हैं. It's not easy, but they've done some work. Second part is launching it. So it's a separate but a full-fledged core base of industry which has to be matured over a period of time. It's not easy. Again, there are a lot of failures. Almost every space agency, every rocket company has lost 10% of the flights as given. So failures से डरना नहीं. इतने failures होंगे for sure. Put it in the design. 10% तो 10 अगर rocket भेजें उसमें से एक तो फटेगा. Okay, don't be afraid. Even in last month, every space agency. Third area is ground system and space products. Space products मतलब है कि आप satellite भेज रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं? Communications के लिए, Earth observations के लिए, weather के लिए, command and control के लिए, navigation के लिए. उसके लिए जो infrastructure है, वो बड़ी industry है. Ground system के अंदर तमाम चीजें. So वो तीनों चीजें जरूरी है. और उसके लिए that हमें इन जो regulatory authorities हैं, space agency हैं, in our case Suparco, should have proper vision and then have to have industry private partnership along with university. उसमें human resources चाहिए which can come from universities. Universities में you have individual centers of excellence कि हम यहाँ पर
रॉकेट टेक्नोलॉजी भी देखेंगे, यहाँ पर इस तरफ विल डू ग्राउंड टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजीज, उसमें ह्यूमन कैपिटल लेके आए, डेवलप होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच विल फीड दोज इंडस्ट्रीज. इट डजंट हैपन 4-5 साल, इट्स अ मल्टी ईयर प्रोग्राम, बट इसका रोड मैप चाहिए कि हम 5 साल में यहाँ पहुंचेंगे, 10 साल में यहाँ पहुंचेंगे, 15 साल तक वी शुड बी 100% fully self-sufficient to launch your own satellites, build your own satellites, maintain it, and not only that, अब तो एक चीज और बढ़ गई है, how can we make money, right? How can we, अब हमारे नेबर कंट्री को देखें, it's become such a massive force. They are providing launch services, they are second to none. I've also had a lot of relations, projects मैंने किए उनसे, but it took them 25-30 years with a vision. They focused on self-reliance. ये बात चीजें ऐसी होती हैं, आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते. ये वो टेक्नोलॉजी, आप किसी पे डिपेंड नहीं, और at any cost you have to do it yourself. And पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है. It's a matter of providing that infrastructure, that roadmap, that thought process, उसको all structured system में करें over a period of 5-10 years के अंदर. Pakistan, I have no reason, I have no doubt in my mind, Pakistan could be another force in the space business, and we should. This is a revolution we cannot afford to miss. हाँ, I mean, ये एक लिहाज से उसी तरह की चीज है कि कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन था, आपका चिप्स का रेवोल्यूशन था, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, और उसमें हम कहीं पर भी नहीं मौजूद. ये एक नया सेक्टर है. आई मीन, एक लिहाज से उसमें जो है स्टिल वाइड ओपन, लेकिन उसमें टाइम, सब्र चाहिए होता है. आई मीन, उसमें जो है प्लानिंग चाहिए, सब्र से ज्यादा, सब्र तो खैर हमेशा चाहिए होता है, प्लानिंग चाहिए कि किस तरह से उसके आगे जाना. तो मेरा इस सिलसिले में एक सवाल है, वो ये है कि देखिए, पाकिस्तान के पास अगर हम लॉन्चिंग की बात करते हैं, राइट, और पाकिस्तान में सुपार्को थी, विच वाज जो सिविलियन थी, जिस तरह से नासा सिविलियन थी, मगर सिविलियन मिलिट्री का भी कनेक्शन होता है. और अगर आप मिसाइल बना रहे हैं, तो अगर आपने मिसाइल का एंगल चेंज किया तो आप उसको सीधा रॉकेट भी भेज सकते हैं. और पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है उसके ऊपर काफी टेंशन है, काफी फोकस भी किया, तो वो मौजूद है, राइट. तो उसको, उसकी ट्रांसलेशन जो है वो स्पेस में क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक लिहाज से, आई मीन, क्योंकि ये जो आप लॉन्चिंग की जिस तरह से बात कर रहे हैं, विच इज जो कि बहुत ना सिर्फ वो आपको सेल्फ रिलायंस होता है, बल्कि आपने, जैसा आपने कहा कि लॉन्चिंग जो इंडस्ट्री है वो तो बहुत sort of like resources के हिसाब से वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती जा रही है. तो वो, I mean, just for the people who may not know, every launch is Boeing facilities, which cost about $150 million per launch. Elon Musk, and they've reduced it now to $50-60 million per launch. That's a lot. I mean, that's a reduction. But but the thing is, you're dependent. हमें satellite बनाकर, we have to still depend. This is for local. अब हम अगर करना चाहें तो it will cost us much more. But India is cheaper than them too. Right. So ये is an economic benefit बहुत है उसका. The cost avoidance of depending on anything and paying somebody else, or paying किसी और किसी और को दे के जाएं तो उससे भी और बहुत सारी चीजें हैं which you don't want. You need to launch your way, when you want, where you want, how you want it. You don't want to be dependent on somebody else for some critical space assets. तो क्या आपको पता है कि क्या इसके ऊपर काम हो रहा है कि वहां पे पाकिस्तान में जो है इस किस्म के लॉन्चिंग फैसिलिटीज डेवलप हो? आई मीन, ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं? I don't know much about that. I don't know. I hope there is. Again, that whole area is shrouded under, you know what that system is. It's difficult to get, and it should be. मैं criticize नहीं कर रहा हूँ. That's how it should be. But the translation from one military aspect to civilian, it's, we have done enough work to build rockets, fuel, solid rocket motors, engines, and launching, उसकी guidance and control, वो सब चीजें हो चुकी हैं. So those are very difficult things to do. We've done that. Now, to go to the next step of launching into orbit, there are some critical things to, but it's not out of the realm to for Pakistan. Not at all. You've done the difficult part.
और नॉट एक दफा नहीं कि कई सालों से कर रहे हैं, द रिलायबिलिटी, they have we know enough about that, so we are, I think, I'm sure we've got very high up on the learning curve उसके ऊपर. But to go to the next step, it should not be difficult. But ये है कि we need a plan, because में I think people are just thinking there's no, it's खाली वो है, इसके commercial angle को रखें तो then, and this can only happen when you allow, again with proper constraints, commercial companies to come in the business. पूरी American industry, European, all these things, space industry got developed by opening the doors to commercial companies, because they can do things fast. So जैसे that Boeing है, transition, right? Boeing, everybody. बिल्कुल. So that if Pakistan के लिए that's a transition, लोग डरते हैं कि ओ कमर्शियल क्या हो जाएगा. No, you have to have proper methodologies. जो firewalls जरूरी हैं, वो जरूरी हैं. I'm not, but once you do that, I think you will see, the whole space segment will change dramatically. The companies are there. Pakistan companies are very good. They have to, but it have to have this industry government partnership. But they should be allowed to make money in a regulated system. और मैं एक चीज कहूँ कि इसमें जो है, इसके अलावा जो एक और चीज की कमी है और जो जरूरी है, वो ट्विंकल, कि लोगों में जो है, आई मीन अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप, मगर आपको लोगों के भी चाहिए इस किस्म की चीज के लिए, खासतौर से अगर आप क्रिएटिविटी के लिए जा रहे हैं, आप एम्बिशियस उसके लिए जा रहे हैं, कि एक शौक पैदा हो, कि खाली इसके लिए नहीं, वो जो एक शौक होता है, तो वो जो एक्स्ट्रा फैक्टर होता है, आई थिंक उसकी भी जरूरत होती है साथ में, स्पार्क. बिल्कुल. उसके लिए व्हाट वी नीड, इसलिए आप देखें उसके लिए क्या होता है कि हर मुल्क एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट बनाते हैं, महंगा होता है, पर उससे लाइक स्पेस प्रोग्राम, वो स्पेस स्टेशन के प्रोग्राम बना, और ये नासा का अपोलो मिशन, उससे कितनों की जिंदगी बदली है, बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट दिस स्पार्क. तो हर कंट्री आप देखें, वो दे डू सम आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स. वी शुड डू दैट. उसमें उसका बेनिफिट इज नॉट इमीडिएट, डॉलर्स ही आएंगे, उसका बेनिफिट ये होगा, इट विल कम इन अ जनरेशन बाय क्रिएटिंग स्पार्क्स. उन बच्चों में आंखों की चमक बनाए आप, एंड दे विल बी द फ्यूचर पीपल हु कैन लीड दीज प्रोग्राम्स. तो वो बहुत जरूरी है. उस जमाने में मैं था, आई एम टॉकिंग अबाउट 71 में पाकिस्तान, उस जमाने में थे बहुत सारे एक्टिविटीज हुआ करती थी, बट आई थिंक नाउ वी आर, हमारा फोकस एज अ सोसाइटी हैज फोकस्ड ऑन समथिंग अदर थिंग्स व्हिच आर, वी नीड टू टर्न इट बैक टू, वो भी चलता रहे, बट बच्चों की जिंदगी बनाना किस तरह करें, उनको हम फॉरवर्ड लुकिंग बनाएं, उनको फ्यूचरिस्टिक करके, उनको वो चीजें बताएं कि जिससे कि वो जिंदगी बना सके, और एंड दे शुड डू इट. आई थिंक इंडिया का जो मार्स मिशन है, आई थिंक दैट वाज रियली अमेजिंग. वो जो ऑर्बिटर था, एक वो सक्सेस भी रहा. आई मीन मार्स के लिए बहुत मुश्किल वहां का ऑर्बिट है, उसके ऊपर इंसर्ट करना. अच्छा, जाने से पहले आखिरी सवाल, ridiculously low cost, एब्सोल्युटली, एंड अ रियली यूजफुल थिंग. और चांद के ऊपर भी जो ऑर्बिट था उनका, दैट एक्चुअली वाज रियली यूजफुल. उसमें पानी जो है वहां पर डिटेक्ट हुआ, पोलर रीजन्स के ऊपर, जो अब इम्पोर्टेंट है. तो जाने से पहले एक और डायरेक्शन, हमने मुख्तलिफ स्पेस प्रोग्राम्स की बात की, वो चीन का, चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है, और उसमें दो सवाल हैं मेरे. एक तो कि क्योंकि वो अपना इंडिपेंडेंटली रहे, और एक लिहाज से जिस चीज की अभी आपने बात की थी कि आपको 10, 15, 20 साल सोचना पड़ता है. चीन का जो प्रोग्राम है वो अर्ली 2000s में उन्होंने सेट किया था, और वो उसके हिसाब से, आई मीन ऑब्वियसली वो हर 5 साल के बाद उनका नया प्लान आता है और वो मॉडिफाई करते हैं, लेकिन ओवरऑल विजन जो है वो उन्होंने उस तरह से सेट की थी और बड़ी कामयाब रही है, राइट? तो एक सवाल तो कि आपका उसके बारे में क्या ख्याल है, चीन के स्पेस प्रोग्राम के बारे में, और दूसरा ऑब्वियसली रिलेटेड सवाल जो है वो, आई मीन पाकिस्तान की चीन से दोस्ती है. आई मीन एक लिहाज से ये प्योरली लक की बात होती है कि हमारा सबसे जो वो होता है ना, जो बेस्ट फ्रेंड है, पता चला कि वो जो है उसके क्लोजेस्ट फ्रेंड जो है उसके पास जो है वो सबसे जबरदस्त टेक्नोलॉजी भी है, जिसके बारे में यू कैन लीप फ्रॉम, राइट? मतलब ये कि अगर आपको, एक तो ये होता है ना कि आप कुछ करना भी चाहें, आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, मगर चीन तो हमारा क्लोजेस्ट फ्रेंड है, चीन से हमारी कोलैबोरेशन भी बहुत ज्यादा है. तो एक लिहाज से तो वो, तो इन दोनों चीजों के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें. बिल्कुल. देखिए, चाइना, जब अगर कोई केपेबल बच्चा हो और केपेबल नेशन हो, उसको आप दीवार के साथ लगाते हैं,
then they find ways. पाकिस्तान की हमारे एविएशन इंडस्ट्री, जो हमारे रॉकेट इंडस्ट्री ना, हमारा फाइटर प्लेन्स हमने बनाए, क्यों बनाए? बिकॉज दे केम टू अ पॉइंट वेयर वी वर ब्लैकमेल कि हम आपको F-16s नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो विल मेक अराउंड, तो JF थंडर बनाया, बड़ा ज़बरदस्त बनाया। kudos to Pakistan, really, because when you push a capable nation against the wall, they do creative things. चाइना के साथ सेम चीज हुई, स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में था, सबके सब जमा हो गए, रशियंस को हमने बाद में लिया, बट बिकॉज के वो देयर वर सम पॉलिटिकल रीजंस, एंड बट वी टाइड यूरोप, सबके हाथ बांध दिए अमेरिकन ने, यूरोप को, रशिया को, कनाडा के तमाम स्पेस एजेंसीज करके, एंड वी ऑल कलेक्टिव वी न्यू एग्जैक्टली कौन सी इंडस्ट्री क्या कर रही है। दे डिडंट वांट चाइना टू बी पार्ट ऑफ इट। चाइना ने कहा हम पार्ट होते हैं, दे सेड नो। व्हाट हैपेंड? चाइना ने कहा अगर ऐसी बात है तो विल डू आवर ओन। अगेन एक केपेबल नेशन को उनको दीवार से लगाने की कोशिश की, नाउ इट्स बाइटिंग देम बैक। सो नाउ चाइना again they came up saying then we'll do our own, but China also is no doubt the country of the future. And the future is 5-10 years from, with 5-10 years, that is the largest economy of the world. It is the country to go. West has its days khatam ho chuke hain, and we are so lucky. Pakistan, I agree with you 100% कि हमारा जो best friend है, he is the country of the future, and the future is 5-7 years from now. And in every technology sector, China is not only leading, it's beating hands down any other country, hands down. Not only that, cost wise, technological wise, not only that, cost wise. So we can, what better deal we have? Plus we have mutual interest, उनको हमारे access चाहिए. So again, I beg हमारे जो policy makers हैं, when we building a road is one thing, but the real benefit हमें देखना चाहिए हमारे मुल्क के लिए क्या है. I hope we negotiate कि हमें इस सेक्टर में कोलैबोरेशन चाहिए, कि we can do a training. हमारे जो ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहा हूँ, जिसका हमें रियल मजा आएगा और उसको फायदा मिलेगा 5-7-10 साल में, वो कैपिटल अब डेवलप हो उन एडवांस प्रोग्राम्स पे जो चाइना कर रहा है. चाइना इज अमेजिंगली way ahead of all these games, and in cost wise too, their cost is ridiculously low in many things. So फिर स्पेस स्टेशन के अंदर उनका स्पेस स्टेशन इज बेटर देन, बिकॉज बहुत दिनों के बाद बनाया है, द टेक्नोलॉजीज दे यूज बेटर, दे हैव लॉन्गर मिशंस. लॉन्च के अंदर बहुत सारी चीजें, स्पेस, all the 3 space segments that I'm talking about, the three-legged stool वाली, all of them, they are way ahead of them. So I'm hopeful, very hopeful, and pray करता हूँ कि जो भी हमारे लोग हैं who are in position of authority, इस segment को ना भूलें, because space is not only for space. स्पेस से हमारी तमाम चीजें होती, स्पेस से हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा, स्पेस से हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम होगा, स्पेस से हमारा वाटर रिसोर्सेज होंगे. ऑल दी थिंग्स जो हर्ट कर रहे हैं, सैलाब आ गया, वी हैव नो आइडिया हाउ टू प्रोटेक्ट सैलाब. भी हमारी 25 मिलियन किड्स हमारे स्कूल आउट ऑफ स्कूल हैं. उसका सोल्यूशन इज नॉट टू क्रिएट टीचर्स इन एवरी स्कूल, क्रिएट अ सैटेलाइट सिस्टम, एंड पूरे मुल्क में हम बेस्ट टीचर को पहुंचाएं, इंटरनेट कनेक्टिविटी दे लोगों को. These are the benefits. Space is not for space. Space is providing the fundamental economic growth factors जो इस किसी मुल्क के लिए जरूरी है, especially advancing countries के लिए. So China, I hope हमारा CPEC के some segment of CPEC must go into this part with some proper goals कि भी education में जाएगा, ये इससे how we can sit. But we need, इसके लिए road map चाहिए, we need planning के हम again first 5-7-10 years के अंदर किस तरह होगा, long term plan. But these things, if we miss this boat, if we miss this great opportunity, बड़ा पछताएगा पाकिस्तान. हाँ, क्योंकि अब जो है वो चॉइस जो है वो खाली आगे पीछे होने की नहीं बल्कि सर्वाइवल की है, क्योंकि फासला जो है जिन कंट्रीज के पास एक्सेस है और जिनके पास नहीं है वो बहुत ज्यादा हो जाए. कंप्यूटिंग में जिस तरह से एक लिहाज से अभी भी है, और आई मीन एक लिहाज से जो आप बात कर रहे हैं वो वही चीज है कि अगर आप किसी चीज में कोलैबोरेट भी करते हैं, जो पाकिस्तान और चीन की बहुत सारी कोलैबोरेशन है जिस तरह सीपैक में है,
तो वो किसी कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। मतलब ये कि जब चीन का जिस तरह से प्लान था कि वो किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाएगा, इसी तरह पाकिस्तान की यस, भी कोलैबोरेशन में एक कॉन्टेक्स्ट होनी चाहिए कि ठीक है, कॉन्टेक्स्ट अगर होना हम चाहिए। आज हम इसमें कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 5 साल के बाद हम खुद क्या कर रहे हैं, राइट? 10 साल के बाद एग्जैक्टली। हम उसका आगे क्या नतीजा निकलेगा। और वो मुझे उसमें जो है with a उम्मीद है। goal to with a goal to have 100% self-reliance in space segment now, दैट्स राइट। self-reliance in all those three pieces of legs in X number of years. Roadmap that has to be very clear in our mind because self-reliance cannot be given up. Because वो बहुत जरूरी है। ठीक है। अब बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके टाइम का जाने से पहले आप कुछ और, अगर आपको कोई मशवरा हो पाकिस्तान में अगर कोई सोच रहा हो स्पेस के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में, इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में, आप क्योंकि बोइंग में थे, फिर अब आप कंसल्ट कर रहे हैं ब्लू ओरिजिन्स को, तो अगर कोई मशवरा हो कि देखें, इस सिलसिले में आप यूँ सोचें, तो कुछ है? क्या ख्याल है आपका? देखें, अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में बहुत सारे, एक एंगल में लेता हूँ। पहले जो प्रोग्राम्स व्हेन आई वाज बोइंग, इट वाज एक सैटेलाइट वाज बिग, एक जियो सैटेलाइट हम जियो सिंक्रोनस पे भेजते हैं एक टेलीविजन चैनल्स के लिए, नॉर्मली $500 million का एक सैटेलाइट, यू हैव टू ऑफ देम लॉन्चिंग वन में आके ऑलमोस्ट $1 billion प्रोग्राम बनता था, एवरी सैटेलाइट एवरी टीवी स्टेशन। वो चीज चेंज हो गई है। आज हमारे पास कंप्यूटर के बजाय ये आ गया है, सेल फोन, राइट? द पावर ऑफ दिस सेल फोन is so incredible, the computing power, the everything. This translates to space also. तो स्पेस में क्या हो गया, अब जो बड़े बड़े सैटेलाइट थे जिसको बनाना, टेस्ट करना, लॉन्च करना महंगा था, अब वो मिनिचराइज हो गई इन फॉर्म ऑफ क्यूबसैट्स। इट इज रियली अ क्यूब, 10 by 10 सेंटीमीटर का क्यूब लगाए, उस क्यूब सैटेलाइट के अंदर यू हैव सो मच पावर इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट कैन डू। और वो चीजें आजकल वो किट फॉर्म बिकती हैं। तो उस तरह यहाँ हर स्कूल में बच्चे बनाते हैं सैटेलाइट्स, उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो जाता है, एंड दे बिल्ड सैटेलाइट, उसके ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ पेलोड, कोई ऑब्जर्वेशन प्लान रखता है, कोई कैमरा लगाता है, कोई फला चीज लगा लेता है छोटी, एंड गेट लॉन्च इट, एक आध साल के रिजल्ट आ जाते हैं। This opportunity has come to Pakistan. It's an opportunity for everybody, but this has opened a new door where our barrier to entry has reduced dramatically. कि हम to build a satellite and to learn a lot about that is much 1,000 times easier now than it was 10 years ago. This opportunity, I would request, have every university should have a CubeSat final year project. Especially कोई मास्टर कर रहा है, कोई 10 लोग मिलके CubeSat बनाए, right? And have a national competition. 10 यूनिवर्सिटीज, एनईडी हो, लम्स हो, कराची में, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज आर अमेजिंग। अब मैं आजकल दूसरी चीज़ों में काम कर रहा हूँ, एस्पायर और नेशनल आइडिया बैंक के साथ साथ, आईज आर ब्लोन अप कि कितना ज़बरदस्त एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान, लेकिन नंबर्स में है। वी हैव टू प्रोवाइड द फोकस कि ये कंपटीशन रखें। एंड आई थिंक I'll be very happy to see a competition with CubeSats in different universities. That will, उससे जो सीखना मिलेगा यूनिवर्सिटीज को, और उनके they'll think of building the final year projects in a much more different way, much more advanced rather than just the same old stuff which was very so उस thinking को हम advance करें. So I would, that's my message, के both to the students, think big, and to universities, especially some high capable universities, highly and then for a period of time have different centers of excellence कि हम इस चीज से focus करें, but competition करें. I think that will be, we will leapfrog a lot of developments in that particular way. ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत सारे इसमें मशवरे भी शामिल हैं। उम्मीद है आपसे तो खैर मैं पहले भी बात करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है आज से उम्मीद है कि 8 से 8-10 साल के बाद हम बात कर रहे हो तो शायद क्या कहते हैं, कुछ चाँद पर गाड़ी हो पाकिस्तान की, वहाँ पे जो है खुद लॉन्च की हुई हो। जाना बिल्कुल अगेन
कोई और लॉन्च कर दे तो वो बात there is नहीं है, no बात reason तो why ये we है cannot do अपने it. उसमें। तो और उसके ठीक है। बीच में अगर I'm available, किसी को हो तो I'm here to mentor, guide, जो भी हो, my services are available for Pakistan and Pakistanis at any time, always. और not only मैं, मेरे कई दोस्त हैं इस तरह से जिनका complete focus है to give back with no monetary incentives, nothing, 100% give back. और ये चीज़ें हैं, और ये मैं करता हूँ, I highly encourage every Pakistani to use us. And हम available हैं, again myself and many other colleagues who are available. So we'll create a network. आपको जो questions हो बताएं, and we will guide you, help you in every possible way. जबरदस्त। इसके सिलसिले में अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं वो भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आगे लिंक करने की। और लेकिन एक दफा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड अगेन आई वांट टू से दिस, जो सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, खासकर उर्दू के अंदर, मेरी उर्दू मैंने बहुत सारे अंग्रेजी इस्तेमाल किए, लेकिन बहुत ज़रूरी है, यू आर प्रोवाइडिंग द कनेक्शन जो ज़रूरी था, और keep the good work. And if I can do whatever I can help you in this, I will do it. But you're बहुत बहुत providing a शुक्रिया। very, very valuable service. थैंक यू।